कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं ZOO3022 के बारे में। ठीक है, हमने इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास पुराने क्वेश्चन पेपर वगैरह हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर सेंड कर सकते हो, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और जब भी आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम के बाद आपको उसका आंसर की वगैरह भी चाहिए होगा, तो उस सिचुएशन में आप अपने पेपर हमको सेंड कर सकते हो। ठीक है, हम आपको उसका आंसर की प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस कॉर्डेट्स फ्रॉम नॉन कॉर्डेट्स इज नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, हर क्वेश्चन के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, द फेरेंजियल गिल स्लिट इन टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स आर प्रेजेंट ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, एक मिनट। Which theory suggests that chordates evolved from sessile feeding ancestor? तो ग्रास्टेंग थ्योरी बोलती है। ठीक है, द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग chordate आर कंसिडर्ड टू बी cephalochordates। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। हेमिकॉर्डेट्स आर नाउ प्लेस्ड इन विच फाइलम? तो इनको सेपरेट फाइलम हेमिकॉर्डाटा में रखा जाता है। द बकल diverticum in Balanogallus was mistaken for notochord। ठीक है, the column of Balanogallus developed by इंट्रोकोली। ठीक है, क्लास पेट्रोब्रांसिया ऑफ हेमिकॉर्डाटा इंक्लूड सेफेलोनोडाइसिस। ठीक है, द genital ridges in Balanogallus are located on lateral sides of trunk। ठीक है, the protocol in Balanogallus refers to proboscis coelium। ठीक है, the tongue bar in Balanogallus gill slit functions in supporting gill slit and increasing respiratory surface। ठीक है, the perihemeal system in Balanogallus is associated with blood vascular system। Metamorphosis of Tornia larva involves development of proboscis and elongation of body, loss of seriated bands, डेवलपमेंट ऑफ गिल स्लिट। तीनों बातें सही हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। द स्केलेटन सपोर्ट इन Balanogallus कंसिस्ट ऑफ cardiolinagus rod in proboscis and gill bars। The body surface of Balanogallus has a mucus gland that and sensory cells। ठीक है, the direction of water current in Balanogallus gills slit is ventral to dorsal। ठीक है, the nervous system of Balanogallus is considered primitive because it is intraepidermal, that is within epidermis। The similarity between Ternaria larva and Echinoderm larva suggest common dentostome ancestry। ठीक है, subphylum Urochordata is characterized by notochord present only in larval tail। The proboscis of Balanogallus is used primarily for burying and food collection। ठीक है, the name Hemichordata literally means half notochord, half chordate। तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, the collar nerve cord in Balanogallus is partially hollow। ठीक है, which of the following is not a similarity between hemichordata and chordata? तो ट्रू notochord। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। the synapticulum in Balanogallus gills structure is horizontal skeleton rod
कनेक्टिंग गिल बार्स, ठीक है। बैलेनोगोलस एग्जिबिट्स विच टाइप ऑफ क्लीवेज, तो रेडियल एंड इंटरमीडिएट क्लीवेज। द ब्लास्टोफोर इन बैलेनोगोलस एम्ब्रियो डेवलप इनटू एनस, ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लास इंट्रापेनिस्टा एंड क्लास पेट्रोब्रांचिया इज number of gills, slit and presence of arms. The pigment in Balanogolus blood is no respiratory pigment होते हैं। In the classification of phylum Chordata, the group Protochordata include both Urochordata and Cephalochordata, ठीक है। The main function of the glomerus in Balanogolus is ultrafiltration of blood to remove waste. The phylogenetic position of Hemichordata is now considered as sister group to Ichthyodermata, both forming Ambularicia, ठीक है। The haptic calacle, that is liver sac in Balanogolus, serves the function of digestion and nutrient storage, ठीक है। The phenomenon where Balanogolus can reproduce by fragmentation is an example of asexual reproduction through regeneration. The subphylum Vertebrata is characterized by vertebral column replacing or supplementing notochord. The term Acrania refers to animals without skull, that is Cephalochordata or Urochordata. The structure connecting the proboscis column to exterior in Balanogolus is proboscis pore, that is hydropore. Balanogolus feed on organic matter and microorganisms in sand or mud. The ventral longitudinal muscular layer in Balanogolus is well developed in trunk. The egg of Balanogolus are microlateral with a little yolk. The evolutionary significance of Hemichordata lies in showing features intermediate between ichneoderm and chordates. The scientific name of the common lancet is Branchiostoma lanciotum. The velum in Branchiostoma is a membrane with velvet tentacles controlling water entry. The rostrum in Branchiostoma is anterior projection extending beyond mouth. The metapliar fold in Branchiostoma are lateral longitudinal fold extending along the body. The ileocolinic ring in Branchiostoma is located at junction of intestine and hingut. Branchiostoma perform which type of locomotion? So both swimming and burrowing. The number of dorsal fin rays in Branchiostoma is approximately more than 500. Epibranchial group, that is a hyperbranchial group in Branchiostoma function in transporting food posteriorly to the intestine. Fertilization in Branchiostoma occurs externally in seawater. The larva of Branchiostoma is asymmetric larva with mouth on left side, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो बता दीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।